we are starting with the next part, which is again associated with it, oscillation. Oscillation is the name of the chapter. So here it is again lecture 1 of oscillation, and we are starting with oscillation. Now you know what is oscillatory motion or oscillation, right? Do you know what is oscillation? Yes, sir. What is it? Can anyone just define it? What do you mean by oscillation? What is oscillation? Oscillation So or the to oscillatory and motion fro is motion. defined as the to and fro motion of a particle about some fixed point, and this fixed point is called mean position. Okay, so now let's consider an ideal spring mass system. ये क्या होता है तो वो मैं बताता हूँ आपको पहले आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है, एंड वी कैन स्टार्ट एनालाइजिंग दिस. Ideal spring mass system में you have one spring and mass attached to it. We consider that the spring is massless and it has zero resistance. यानी resistance यानी no frictional losses. यानी hence no frictional energy लॉस. यानी आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करो, उसको कंप्रेस करो, कुछ भी करो, फ्रिक्शनल एनर्जी लॉस कुछ भी नहीं होना चाहिए. दिस इज द आइडिया. ओके, एंड इट इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m एज शोन. तो अभी डायग्राम तो मैं बुक में से कॉपी कर रहा हूँ बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ फॉर मी. आई कैन नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम and you cannot draw this kind of strings and all. So look at it. What I'm doing, I'll tell you first. Say look at 5.1b. That is the central figure out of 3. Look at 5.1b. When the spring is relaxed means आपने इसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया, चाहे तो of mass m placed on a horizontal frictionless surface. ठीक है, as shown. तो ऐसे हो गया आपका काम अभी. तो ये हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसके ऊपर आपने ब्लॉक एम को रखा एंड दिस इज द अरेंजमेंट. तो ये स्प्रिंग का रिलैक्स लेंथ है, मतलब आपका स्प्रिंग का ये लेंथ है, इसे कहते हैं. आपको अगर चाहिए तो मैं इसे मार्क कर देता हूँ. दिस लेंथ इज द न्यूट्रल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. आप स्प्रिंग के न्यूट्रल लेंथ को सेंटर ऑफ मास तक मेजर करोगे. सो यू विल बी मेजरिंग अप टू दिस पॉइंट. ओके, ऐसे यहाँ से, सॉरी, इस फिगर में यू विल बी कहाँ से मेजर करोगे, इस फिगर में यहाँ तक आप मेजर करोगे. दिस इज द न्यूट्रल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. यानी आपने स्प्रिंग को ना एक्सटेंड किया है, ना कुछ किया है, ना ही स्ट्रेच किया है, ना ही कंप्रेस किया है, कुछ नहीं किया. इट इज कॉल्ड रिलैक्स और न्यूट्रल स्टेट ऑफ द स्प्रिंग. कुछ नहीं, अपने स्प्रिंग को ऐसे रख दिया बस. स्प्रिंग को रख दिया तो स्प्रिंग अपने आप ही इतने डिस्टेंस तक रहेगी. दिस इज द न्यूट्रल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ओके, ये न्यूट्रल लेंथ है स्प्रिंग का. हमें लेंथ से फिलहाल कुछ काम नहीं है, तो मैं कोई वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ. पे अटेंशन, आई एम नॉट यूजिंग एनी वेरिएबल, आई एम नॉट एडिंग एनी वेरिएबल हियर. आई एम जस्ट कंसीडरिंग दैट कि ये न्यूट्रल लेंथ है स्प्रिंग का. फाइन, ठीक है क्या? अरे कुछ आंसर करो रे. दिस इज द Yes, sir. न्यूट्रल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग रख दिया तो ये होता है. Now what I'm going to do is, when neutral length of the spring is there, this spring cannot move in vertical direction as इसका खुद का मास 0 कंसीडर कर लिया. ये mg is balanced by normal reaction, so there is vertical equilibrium and there is no force horizontally also, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया तो कुछ फोर्स होता नहीं है. So when there is no force, it is also in horizontal equilibrium, right? So when it is also in Yes, sir. horizontal equilibrium, तो ना ये राइट में मूव होगा, ना ये लेफ्ट में मूव होगा, कुछ नहीं होगा. Then what I'm trying to do is, I'll hold this mass and I will take it to right. अभी ये मैं खींच के लेके जा रहा हूँ उसको राइट में, and I'll hold it at distance x from this original distance. यानी ओरिजिनल 0 कंसीडर करो आप यहाँ पे. तो ये x डिस्टेंस पे मैंने इसे स्ट्रेच करके रखा है. दिस इज 0, दिस इज 0. ये 0 पोजीशन है, पोजीशन 0, एंड दिस इज x एंड द अदर साइड इज -x. तो नाउ व्हाट विल हैपन. तो हमें आइडिया है कि अगर मैंने इसे ऐसे खींच के पकड़ के रखा और छोड़ दिया तो क्या होता है. पहले तो मैंने पकड़ के रखा, आई मेक श्योर दैट कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, एंड देन आई लेफ्ट इट.
then it will start moving towards the center again. Do you agree? Yes, sir. Okay. And as it reaches the center, it will have its own velocity. देखिए यहाँ पे हमने consideration में लिखा है कि frictional losses नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मतलब neither there is frictional loss in the spring or there is no frictional loss here between the block and the surface. So it will be moving with some velocity v as it reaches here. Then what happens? It cannot be stopped. According to Newton's first law of motion, it has to be stopped by applying equal and opposite force or something like that, or some external unbalanced force. So since there is nothing here, no force here at this position, as you know, it wasn't there, it will continue to move further, and then it will start compressing the spring. And as you know, when you stretch the spring, there was a force which was trying to pull it towards this. As you compress the spring, the force will start trying to push it towards the main position. So its kinetic energy will be lost and it will be stored in the form of potential energy of the spring. That's the logic. I'm talking in general now. And then when you see that कि ये पूरा रुक गया, अभी spring compressed है, तो spring will push it back again to this position 0. And again, when it comes to position 0, because of inertia, it will tend to move further, and then this will keep on happening. So oscillatory motion will take place. Have you understood this? Yes, sir. Okay. So now we have two definitions. There are definitions of certain things like amplitude of oscillation. Now, what is this? And you know these things, so I'm just writing the definitions first. Now you know what is oscillation, what is oscillatory motion, and how it takes place in case of this ideal spring mass system. So what is amplitude of oscillation? So for any oscillation, it is the maximum displacement of the particle performing vibration or oscillation. Of course, vibration or oscillation are the same things. Okay, from its mean position on either side. So you measure it on right or measure it on left. Whatever maximum distance it can cover is called amplitude, and its SI unit is meter. What is one complete oscillation? So one complete oscillation is, what is one complete oscillation? The particle performing oscillatory motion completes one oscillation when it comes back to its initial position after traveling the entire path. ठीक है, यानी इसने यहाँ से चालू किया, तो ट्रैवलिंग द एंटायर पाथ मतलब इसे राइट में जाना है, वापस लेफ्ट में आना है, वापस और लेफ्ट में जाना है यहाँ तक, और फिर वापस आना है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes. ओके, सो ये सिचुएशन है वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए. ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट? Frequency. Yes, what's next? Frequency Frequency period. of the oscillation. हाँ, आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी पीरियड, ये भी सब डेफिनेशंस होते हैं ना, ये सब आपने किया हुआ है स्कूल में. Yeah. So what is this? To define period of oscillation. So it can be defined like this: the time taken to complete one oscillation is called period of oscillation. And then you may define frequency also, right? So what is frequency of oscillation? The number of oscillations performed per second is called frequency of oscillation. Are you comfortable with this? Have you understood this? इसमें definitions तो understand करने की चीज नहीं होते, वो तो definitions होते हैं, तो you know that कि वो definitions है, तो वो वैसे ही है, वो आप और मैं decide करके कुछ change नहीं कर सकते उसमें. But हाँ, those are the definitions, and this is the diagram we have with respect to which we will be doing our further analysis. Are you comfortable up to this point? Yes, sir. Okay. Now let's analyze this. अभी यहाँ पे एक situation है. Don't write anything. I'll give you enough time to write, but I want you to concentrate now. When you started here at this point, point 0, इस पे कोई force था क्या? No, sir. नहीं था. But when you stretched it and held it here at this position, position A में दिखाया diagram A, इस पे force होता है ना? Yes, sir. If you are holding it there, then there are two forces. One force is towards right, applied by you, and other force is towards left due to the stretching of the spring. Is it right? Yes, sir. Now when you release it, आपका force 0. Which force is actively present there? It is the force due to the spring, correct? Of the spring. हाँ, और जैसे आपका मास लेफ्ट साइड में जाने लगेगा, you will see that its velocity increases, और वो दूसरी तरफ चला जाता है with decrease in velocity. If you perform a bit more experiments, you will find that
जितना आप स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट, आप उससे एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करेंगे तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा, बट इफ यू हैव आइडियल स्प्रिंग एंड इफ इट कैन एक्सपांड टिल इंफिनिटी, देन आप स्प्रिंग को x तक एक्सपांड करो और आप स्प्रिंग को 2x तक एक्सपांड करो, एंड यू विल सी समथिंग very strange and interesting. If you expand the spring to x, it goes to x on left hand side, assuming that there are no frictional losses. If you expand it to double the distance, it will go to double the distance on left hand side. What is the confusion from this? Of course, while talking about these things, मैंने बहुत सारी चीजें बोली, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, तो आपने यहाँ पे जितना एनर्जी स्प्रिंग में डाला उतना ही एनर्जी वहां पे स्प्रिंग में होना चाहिए ड्यू टू कंप्रेशन, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स उस तरफ होना चाहिए. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? Yes, sir. Now when you release it, आपका force 0. Which force is actively present there? It is the force due to the spring, correct? Of the spring. हाँ. और जैसे आपका मास लेफ्ट साइड में जाने लगेगा, you will see that its velocity increases और वो दूसरी तरफ चला जाता है with decrease in velocity. If you perform a bit more experiments, you will find that जितना आप स्प्रिंग को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट, आप उससे एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा करेंगे तो स्प्रिंग खराब हो जाएगा, बट इफ यू हैव आइडियल स्प्रिंग एंड इफ इट कैन एक्सपांड टिल इंफिनिटी, देन आप स्प्रिंग को x तक एक्सपांड करो और आप स्प्रिंग को 2x तक एक्सपांड करो, एंड यू विल सी समथिंग वेरी स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग. If you expand the spring to x, it goes to x on left hand side, assuming that there are no frictional losses. If you expand it to double the distance, it will go to double the distance on left hand side. What is the confusion from this? लेकिन फोर्स कहाँ पे? लेफ्ट में. जब वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, फ्रॉम जीरो, जीरो सेंटर में, ध्यान रहे, फ्रॉम जीरो जब वो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में जाएगा तो आपका फोर्स कहाँ पे होगा? राइट में आ जाएगा. तो इफ आई वांट टू राइट इट मैथमेटिकली, आई शुड राइट इट लाइक दिस. मुझे दिख रहा है जो रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, आई विल जस्ट कॉल रिस्टोरिंग फोर्स इज एफ हियर. अगर मैं मेरे हिसाब से ऐसे लिखूं यहाँ पे, तो रिस्टोरिंग फोर्स एफ वेक्टर is directly proportional to the displacement of the mass from the mean position and it is directed opposite to the displacement, so I have to write it like this. Correct? Vector लिखा मैंने. Now since the motion is along straight line, मैं इसे डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ. आई होप यू रिमेंबर, हमने काइनेमेटिक्स में 11th स्टैंडर्ड में ऐसा बहुत कुछ किया था. पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस के लिए पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स आर द ओनली टू डायरेक्शंस यू कैन हैव, राइट? यानी पॉजिटिव, आप एक एक्स एक्सिस इमेजिन करो, तो एक्स एक्सिस पे यू हैव पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. इफ यू फिक्स योर ओरिजिन एट 0, तो पॉजिटिव साइड में जाने के लिए और नेगेटिव साइड में जाने के लिए फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा? तो व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, फोर्स विल बी नेगेटिव, यानी अपोजिट डायरेक्शन. व्हेन एक्स इज नेगेटिव, फोर्स विल बी पॉजिटिव. तो ऐसे लिखेंगे हम इसे. आर यू कंफर्टेबल विद दिस मैथमेटिकल आइडिया ऑफ राइटिंग दिस? सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. अभी ये सिंपल है. अभी ये वहां पे मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया है. And we all know that what is to be done with this kind of constants. क्या है वो constant? इसे हम कहते हैं constant of, इसे क्या कहते हैं हम? Constant of, definitely constant of proportionality is what we have. And this constant of proportionality से हमें क्या करना है आगे? Constant of proportionality का हम क्या कर सकते हैं? तो उसका units ढूंढते हैं हम. Common, see, these are the common steps we follow. ये constant of proportionality मिला, ये हमें force का expression मिला. Next step में हम क्या करते हैं? हम इस k का डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो देयरफॉर k इज इक्वल टू मॉड ऑफ f बाय x, यानी f पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, वो डालो और उसका मैग्नीट्यूड ढूंढो. मैग्नीट्यूड आपको समझ में आता है ना? तो एक दैट k का वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, ऊपर लिखा है k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, व्हाइल वेक्टर्स तो कुछ और है. सो एसआई यूनिट ऑफ दिस k इज न्यूटन पर मीटर. क्या है एसआई यूनिट? न्यूटन पर मीटर. ठीक है? Have you understood this? यहाँ तक सब ठीक से गया दिमाग में? चलो अभी ये पहले लिखना है इतना काम. सारे डेफिनेशन एक साइड में लिख लो, डायग्राम ऐसे बनाने हैं और ये आपको पूरा लिखना है और डू इट फास्ट. क्या आराम से मत करो, हमें टाइम कम है हमारे पास. Alright, so here you have all the definitions, basic definitions and your बेसिक आइडिया ऑफ हाउ इट टेक्स प्लेस, हाउ ऑसिलेशन टेक्स प्लेस. हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया इसका. एंड वी हैव दिस रिलेशन फॉर दैट फोर्स. नाउ विल ट्राई टू लुक फॉरवर्ड टू अ मोर मैथमेटिकल डेफिनेशन which we need here. There is a word used commonly, linear simple harmonic motion, or sometimes abbreviated as linear SHM.
in most of the books. Okay, so what is this now? What we have studied up there is called linear simple harmonic motion, more technically. The to and fro motion of a particle about its mean position along a straight line in which the restoring force or the acceleration, now of course you know that force is equal to mass into acceleration, so you may write acceleration by dividing this k by that m, okay, is always directed towards the mean position, and it is always directly proportional to the displacement of the particle from its mean position. It's called linear simple harmonic motion. So regarding this spring mass system, whatever the motion was, it was linear simple harmonic motion, but there we simply defined oscillation, and now we are getting into the more mathematical definition, which is called linear simple harmonic motion. So what is linear simple harmonic motion? Once again, what is it? The to and fro motion of a particle about its mean position along a straight line in which the restoring force or acceleration is always directed towards the mean position, and it is always directly proportional to the displacement of the particle from its mean position. Okay, and that type of motion is called linear simple harmonic motion. That SHM is abbreviation of that linear ka linear छोड़ दो, simple harmonic motion as shown in here, as written in that text. Okay, so now let's analyze the motion as simple harmonic motion. So let's see this. पहले तो इसे कहते हैं mathematical representation of linear simple harmonic motion. We call it differential equation because it is in the form of differential equation. What do you mean by differential equation? तो यहाँ पे variable के derivatives होते हैं equation में. Okay, not only the variables but they have their derivatives in the equation. ठीक है, तो let's try to get this. So for a spring mass system, of course we are using the same diagram and same consideration. So from this for the spring mass system, the restoring force is given by F is equal to minus kx. But we know that F is equal to ma from Newton's second law. Is it right? Yes, sir. Yes. तो हम इसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं where हमें पता है m is mass and a is acceleration. So therefore ma is equal to kx लिख सकते हैं, minus kx, sorry. Therefore acceleration becomes minus k upon mx, जैसे मैंने ऊपर बोला. Hence acceleration plus k upon m into x is equal to 0. ये algebra है simple. अभी हमें acceleration का definition पता है, हमने last year किया ये definition. What is acceleration? तो acceleration is actually dv upon dt, but उसमें से भी v dx upon dt होता है, derivative की बात कर रहे हैं हम. So v itself is dx upon dt. So your acceleration becomes d2x upon dt square. I hope you remember this. हमने ये पहले भी किया है. So therefore your expression can be written as this. Okay, d2x upon dt square plus k upon m into x is equal to 0. ये expression मिला आपको. अभी k upon m का डायमेंशन एनालिसिस करके जरा चेक करो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं. डू इट क्विकली, टेक पेंसिल पेपर पेन और जरा ढूंढो कि k upon m का यूनिट क्या होना चाहिए.